हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग और स्वागत है आपका फिर से एक बार Word of our growing settlement has reached outside ears. Assassin's So have a Creed look around. Valhalla में। You may see a few new faces. बहुत बढ़िया। और तुम दोनों ऐसा क्यों देख रहे हो? तुम ऐसा क्यों देख रहे हो एक दूसरे के पास? अरे ए, अबे सालो लाइन बनना बंद कर दो। अबे अबे रंधावी जी, मैप दिखाओ जी। I want to see the Alliance map. भाई ये क्या था? Hytham asked that I travel to London. What do you know of it? A wild city, one that Halfdan Ragnarsson tried to claim for himself years ago. But it resists all attempts to be held. Hytham claims the city is overrun by a strange cult, the Order of the Ancients. He asked that I track them down and kill them. Doing so may help the honest people there, and earn us an ally in the process. In a city so chaotic, it is worth a try. Approach by the north gate and start asking around. I will. Good. I await your return. Rest assured, Eivor, the settlement is in safe hands. That is... तो गाइस, हम लोग लंदन को हम लोग प्लेस करने वाले हैं आज। तो अलायंस बनाने वाले हम लोग लंदन में जाके। तो लेट्स गो, सीधा चलते हैं लंदन में। और हम लोग आ चुके हैं लंदन सिटी में। और ये हमारा घोड़ा है जिसको हमने मॉडिफाई नहीं किया अब तक। इसको ट्रेनिंग नहीं दी, इसको ट्रेनिंग भी देने का है। अबे रोड कहाँ से बे? ओके, थोड़ी रास्पबेरी भर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया रास्पबेरी ये मिशन में। अरे घोड़े, अबे चढ़ना। अरे घोड़ा, इसको घोड़े को रास्पबेरी नहीं, घोड़े को चना चाहिए, सिर्फ चना। ओ भाई नसीब, फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो यार, ट्रैवल टू लंदन, स्पेलिंग देखो, LUND लंदन, अलग स्पेलिंग है। तो हमें किसको मिलना है अभी तक तो कंफर्म नहीं है किसको मिलना है, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा किसी को मिलना है। तो हम लोग आ चुके हैं आगे। सीधा घोड़ा को पार्क किया, वहाँ पे लगा दिया है चारा खाने के लिए। और ये चूहे, भाई लंदन में इतने चूहे, इतने बड़े बड़े चूहे, माँ कसम। और ये 1870 BC का लंदन है, उस जमाने का। तो चलिए। I beg patience all. We'll have this rat cleaned up in no time. Keep it steady, huh? There you are, love. Hey, bear up, Master Ame. You'll be on your way shortly, huh? Something of a shepherd, aren't you? It can feel that way, aye. Can I help you with something? Who governs this burgh? I would like to speak with him, if I can. Ah, the Governor Trigger. Good and fair Dane come to Lunden 4 years back. Trigger! Aye, most hours of the day you can find him at the old villa, dealing with all manner in Avery. Stow! Avgos wants his cut of the summer harvest. Shit, Carl. Huh? What's the hold-up? We're talking. Gentlemen, the farmers of Mercia have paid their burden already. If Avgos wants more, he can petition for it. Petition for it? Well, you can tell that old mud merchant. And if he wants his apple, he can bob for it. Belongs to Master Ame, sir. Bob for it! That is filthy. Bob for it! Is this kind of noise coming to London? Now, look quiet, James, and a great while. Try not to kill anyone, eh? I'll roll your face in a skull capstone! Watch your...
God in heaven, you fight like the devil's stolen your bread. You give some hard knocks yourself. Road, be a good lad and prick the names of those that pay their food tax, will you? Right then. You've some dealings with Governor Trigger, is that it? I will have dealings with any who can deliver fair friendship with my Raven clan. If that is you, then all the better. Ah, no. Trigger's your fellow. I'm the Shire Reeve of Lunden's westerly half. I keep things ordered and fair. Shire Reeve is not a name that rides easy on the tongue. Reeve's my title, sorry. Stow's my name. Stow of Lunden. A burly name for a burly man. I like one who can hold himself in a brawl. To walk tall in Lunden, a man must know how to swing his fists. It is not empty praise I give. Well, your candor is appreciated. Take me to your governor, Stowe. He sounds like a man worth knowing. Right then. Station filled, flock shepherded, and off to Trigger we go. What can I call you? Humbler of thugs? Dane Hammer? I am Eivor of the Raven clan. We have a settlement to the north, just off the River Neen. Well, I owe you a great debt, Eivor. You're a worthy ally. So, this is London, a city built by giants. So they say. She's an old place, as early as they come. But there's a mystery here I quite adore. I was raised here, in fact. Learned the scriptures of Christ's apostles in Lundenreach. I was Saxon Borough, just past the western walls. You're not a priest, are you? No. No, I was raised by them. And for a penniless bastard, I turned out pretty well. A penniless bastard, and now London's fearless Reeve. Well, it's Trigger who saw something in me. He judges not the circumstances of my birth. His two hands, left and right, on me and a Dane-born soldier, Erke. Erke's an orphan of the last Viking horde put down in Lunden for a season. 2 or 3 years back now, it must have been. Wait. Something's wrong. Iron on the air. This blood is fresh. These were good men. What's happened here? God, no. No. It took 3 arrows to kill him. The next 12 were an insult. O Lord, deliver these men with the light of thy countenance visiteth and shines upon them. You've no need for outsiders, Stowe. It's a private matter. There's no cause to be leery. Eivor had my back in a brawl at Cripplegate. More thugs from the garrison. You must be a real broker to hold your own against those shithugs. It's time to fetter those men, Stowe. It can't go on like this. It's a serious attack. Were they after you as well? Now that's a fine question, isn't it? You must be Erke, London's second Reeve. Erke Botel's son, yes I am. Are you telling me this gut bucket called me second Reeve? First in the Eastborough, and a man I trust with my life. Stowe's never been a good judge of character. Erke, this is Eivor. He came to meet with Trigger, to seal the bonds of friendship with his clan. He would have welcomed you heartily. He was a trusting man. And that got him here. Have you found anything? I just arrived. The killers left a ladder on the body there. I'll have a look around. Trigger had men with him at all times. How could the killers get through? They must have been known to him. Well enough to get close without suspicion. Good and holy Christ, that could be most anyone. He governed this burg. Oh dear. What is it? Dirty notes from a mistress. Sorry. Mistresses. This letter. Someone wanted us to see it. From Rome went an order of heretics who worshipped the relics of a time before Christ. Erke, this was the letter he told us about. Said it contained fearful news about Lunden. It warns of 3 such heathens who have infiltrated London. His killers, I expect. Dirty notes from a mistress. Sorry.
Mistresses. Intrigue's desk. Ah, yes. The old man had a wandering hand. And I Didn't know. I didn't think. He didn't want you to. It was his secret to keep. Find anything? Besides enough blood to paint the city's faded bricks. No. 3 sets of footprints leave. 2 average and 1 massive. A barber surgeon's tools. Sharp and precise for easy butchery. Must have been what was used to free Trigger's head from his neck. यहाँ पे बहुत खतरनाक लफड़ा हुआ है गाइस। घुसखोरी की है इन्होंने और इनके राजा को ख़त्म कर दिया है। चक्कू घुसा के पेड़ में उनके चक्कू घोंप दिया है और एक को यहाँ पे फांसी दे दी है, उल्टा लटका के, उल्टा नहीं सीधा लटका, लेकिन फांसी दे दी है उसको। I do not envy this man's death. Hang on. There's something in his hand. This was not Trigger's seal? No, it looks Roman in origin. Must have been on a ladder he opened. It must have been significant to this god for him to grasp it even in death. Perhaps it's what got him killed. I think I have a clear idea of what happened here. Trigger was shot where he sat, probably as he read the letter. One of his guards grabbed the seal and tried to escape. He didn't make it. A second killer found him first. He met his end at the noose, lifted by the bigger man. A third attacker took his eyes, then came for Trigger's head. Symbolic, maybe. Headless leader, eyeless guards. The killers were without fear. This killer was a message. Their footprints leave together. 3 sets, heading back to the courtyard. The letter mentions 3 heretics, named only by Manicus. The leech, the arrow, the compass. Signed by someone calling himself a poor fellow soldier of Christ. Poor fellow soldier. Odd name. 3 names, 3 killers, as you said. Baldersack. It could be anyone in London. Who can we trust? Only the people in this room, I fear. Even that would be unwise, until we know more. The arrow is described as a pugnacious Dane invader. That describes too many in Lunden. The leech hails from Wessex. Lunden is home to many of them as well. And the compass, a Frankish captain. Less common, but no face comes to mind. What is this symbol here? I recognize that from the Mithraic temple. I passed it on the way here. Mithraic temple? Is that a church? A church? Heavens, no. Mithras was a pagan idea. A so-called god beloved by the ancient soldiers that built this city. Our city is overrun with cowards. We may be next to fall if we don't resolve this sick fermentation of hate. I've told you, this city answers to blood and power. We should serve as such. I can't leave him like this. I need to. We'll get the church to see to it, Stowe. No. No, it should be me. I must ready him for judgment. I understand. Only get some air from time to time. It reeks in here. Shall we, Broga? Well, now the locals have caught a whiff of this fatted mess. The temple is yours to explore, Eivor. It's to the east of here. I know where my ring plays.
Should the Reeves change their minds, I will have to gut them and put a puppet atop London's throne. But Stowe seems a good man. I will trust his word. Go, Lunden. कबूतर, ए कौवे, कुछ दिखता है क्या? देख, एंट्री कहाँ से देखना हो पहला। ओके, यहाँ पे नीचे एक गुफा दिख रही है, छोटी सी टनल दिख रहा है, वो टनल के अंदर हमको जाना है शायद से। तो बढ़ते हैं आगे यार। ये क्या चलो यहाँ पे? ये अंधेरा बहुत है आज लंदन में। लंदन में लाइट की बहुत कमी है, कमी है लाइट की, बहुत कमी है लाइट की। और हमें यार सुमड़े में काम करना पड़ेगा। अगर कहीं इन्होंने देख लिया तो हमको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी शायद से। This place is heavily guarded. इसको मारते पहला। नाइस। जो हैवी डैमेज है उसको हम लोग को ऐसे ही मारना पड़ता है। वो स्किल से एबिलिटी हो, अगर आपने एकदम परफेक्ट सेंटर में अगर आपने F दबा दिया, जब वो रेड लाइट के बीच में आता है, रेड लाइट रेड एरिया के बीच में आता है, तो वो उसको पूरा किल कर देगा। या फिर अगर आपने लेट दबा दिया, फिर जल्दी दबा दिया, तो वो पूरा किल नहीं होगा जो भी एनिमी हो। तो फ़ायदा नहीं फेस किल करके, सबको पता चल जाएगा वैसे भी। तो चलिए यार, वेल इधर आगे बढ़ते हैं, इसको इग्नोर करते हैं भाई। अबे निकलना साले बुड्ढे बाजू। मरने का बहुत शौक है रेड को यार, बहुत शौक है मरने का। ओ भैया चलो अंदर, तलवार निकाल अपनी। Tools for a surgeon, finely crafted, like we found in the villa. And there's a letter here, arranging payment to a blacksmith. The compass holds sway over the others. He has ordered the arrow to recruit archers in a market to the west. Worth a visit. कोई बात नहीं, समझ गए हम कहाँ पे जाना है अभी। यहाँ पे ऊपर जाना है। सबसे पहले ये लूट कर लेते हैं, क्या मिलता है इसमें देखते हैं। शील्ड, भैया शील्ड मिली है, अच्छी शील्ड है बहुत। बड़े शील्ड का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मज़ा नहीं आता यार। दोनों हाथ से फाइट लेनी चाहिए। हम लोग स्पार्टकस है, हम लोग दोनों हाथ से फाइट लेंगे। एक छोटे छोटे क्लूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। The leech is a strange one, but the compass calls to strikes. I have got enough to go on for now. Erke and Stowe must see all this. I see more bloodshed in London's future. At least Sunan will feast. तो गाइस, हमने जो भी क्लूज थे सब जमा कर लिए। अब वापस जाना है हमको स्टोव और एरिक के पास। स्टोव पता नहीं कौन सा स्टोव है ये।
गर्म पानी करने के लिए रखता है, स्टोव यूज़ करेंगे हम लोग। नाइस। तो यार चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, बिना किसी बकचोदी के, बिना किसी देरी के सीधा भागते, एनिमीज़ को इग्नोर करते हैं, अपना रास्ता पकड़ के सीधा भागते हैं। कपल में आए हुए अपने, कोई बात नहीं। घोड़े, मेरे घोड़े किधर गए? घोड़े कहाँ पे जाना है? ओके इधर जाना है। ओके समझ गए। अब इनको प्रूफ देना है कि मतलब क्या था, किसने किया ये सब कुछ। तो जो भी किया उनका नाम अभी पता चल जाएगा, रिवील होगा थोड़ी देरों में। It's worth knocking on a few doors, that's all I'm saying. Tigger wasn't killed because you want to plant a few trees and fix a few roofs in Lunden. Looks less like a meal for crows in here. Eivor, you bring good findings, I hope? A few sheets of vellum, notes between members of a secret society. The Order of the Ancients, they are called. Order of the Ancients? Doesn't sound any bells in this head. What's the purpose? That would take some time to explain. But know this, that I am here to kill them. In London, it seems the compass is the head. The arrow and the leech are his hands. Pet names and secret orders. What a crock. Do we know anything we can act on? The arrow is a Dane who has seen his share of battle. His name suggests he is an archer. I bet my knuckles he's the one sowing discord among the Danes that shelter in Lunden. If it were me, I'd hide among my ranks, surrounded by other fighting men. The arrow has orders from the compass to recruit soldiers at a market in the west. I know the very place. Let us not waste any more time. We'll find the arrow and the leech. Killing both should drag the compass back into port. So, I will catch you at the western market. Count on it. And I'll make for the keys. There's another few bodies there to fish out of the muck. It could be the leech is back at work. God be with us, friends. Go in his name, and be protected by him. Is this the leech's work? Yeah. New corpses every day. How many bodies is that now? A score have been uncovered. Definitely the leech's work. How can you be sure? Their eyes are scooped out. Black, empty caverns. Same as Trigger's gods. Must be hundreds of people passing by here each day. Anyone see them dumped? It's the riverbank, Vinner. Every crooked dealing in this city goes through here. Heard from Stowe yet? About the arrow? The leech is my focus just now. Does something worry you? No, just checking up on the old Sparrowheart. You two are close, like brothers. Yeah. Close like brothers, you could say. Erke! Tell me it wasn't her! It wasn't your daughter, dear Kida. Take a daughter. breath. Oh, thank Freya. I have such a fear I will find Freya. her down here. She works errands भाई for a फ्रेया smith बोली who इसने, sends her इसने to फ्रेया these बोला। docks. Most times at night. आई थिंक cannot फ्रेया नाम stand सुना है हम लोगों ने। ओ भाई ये तो फ्रेया हम लोग की क्वीन है एसगार्ड में, When did she मिथिक go वर्ल्ड, missing? मिस्टीरियस A वर्ल्ड few में। days back. Left after ओ भाई अभी sundown. भाई कुछ तो झोल है, मतलब यहाँ से कुछ तो स्टोरी What sort लिंक of है job एसगार्ड का, is she मतलब at? हम ही ओडी नहीं, मतलब इसके हिसाब से। She would make a delivery. trade it भाई for hack गेम silver, मुझे तो अभी and फिलहाल कुछ scurry समझ back में to the समझ में नहीं आ रहा Do you know the है, name सब कुछ of the मेरे man? Name. Anything else you कंफ्यूजन हो रहा remember? हूँ। I had फ्रेया a नाम neighbor तो once फ्रेया तो tell हमारी me क्वीन That है is a good एसगार्ड में, place to ठीक है, start. बट अभी इसकी लड़की का नाम भी फ्रेया London है। Bridge after sun. Good. तो And Eivor, क्वेश्चन था उसके बारे में, don't drop your पूछने लगे guard हमने around पूछा these नहीं, things. इग्नोर Do कर I दिया look like one who could? घाई में। बट कुछ तो सबूत या फिर कुछ तो कनेक्शन है इस स्टोरी में एसगार्ड और जो मिस्टीरियस वर्ल्ड है जो हम लोग सपने में दे जाते हैं ओडिन के वहाँ पे।
कोई बात नहीं यार, मतलब एक बात तो यहाँ पर हमारे समझ में आ चुकी है कि वो जो फ्रेया है वो फ्रेया हो सकती है जो हमें एसगार्ड में हमारे क्वीन है, ठीक है। तो अभी तक तो मिली नहीं है फ्रेया कौन है यहाँ पे, तो लेट्स फाइंड आउट गाइस। सबसे पहले तो अभी हमें करना है किसको मिलना है, फाइंड आउट द कॉन्टैक्ट मीटिंग पॉइंट। ओके, जो कॉन्टैक्ट है जिसको हमें पकड़ना है या फिर उसको फॉलो करना है, तो वो वहाँ पे आता है। ही ओनली शोज़ अप एट नाइट। तो अभी तक तो रात हुई नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे और मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक रात हो जाएगी वैसे भी। यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए से। चढ़ जा बच्चा, चढ़ जा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा। बच्चा नीचे गिर गया। बच्चा ऐसा क्यों करता है बच्चा? बच्चा गलत बात कर रहा है, पार्कोर गलत कर रहे तू, इधर नहीं। अब ऊपर चढ़ जा बेटा। अरे उतरना नीचे, कहाँ पे गए? अबे साला ये तो नीचे है वापस। अबे यार। ओके, यहाँ पे रुकना है, ठीक है। तो हम लोग मेडिटेशन करेंगे अभी। रुको, थोड़ी अच्छी जगह ढूंढने दो मेडिटेशन के लिए। बेटा मेडिटेशन करो बेटा। ओ बेटा जी मेडिटेशन करो ना। अबे कर रहा क्यों नहीं है? काम करते जी से करते हैं, ठीक है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं। बहुत बढ़िया, मेडिटेशन चालू है हमारी, योगा कर रहे हैं हम लोग। अब आ चुके हैं हम लोग रात में। अब आ गया है वो बंदा जिसका हम लोग को फॉलो करना है, चुपके से देखना है, उसके ऊपर नज़र रखनी है, कड़ी नज़र रखनी है। ये बूढ़ा हो, अबे इसके बाल ही कापूस है। और ये शील्ड कौन सा है? ये शील्ड तो मेरे को साले लकड़ी का फर्नीचर दिख रहा है सिर्फ। बुड्ढे साले, इधर देख। कुछ तो लफड़ा है बुड्ढे में कुछ तो झोल है। बुड्ढा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बुड्ढे को फॉलो करना है हमको। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो क्लॉक पहनते अपना। किधर गया बुड्ढा? अबे भाग गया। अबे किधर गया? बुड्ढे अबे कहाँ पर गया? ओके समझ गया भाई। वो इतने जल्दी वहाँ पे भी चला गया। बुड्ढा भाग के गया क्या? उसको खबर हुई क्या अपनी? नहीं। ओ भाई इधर है बुड्ढा। ओ भाई देख लिया। ओ भाई मारो। नहीं ये तो भाग रहे हैं। अरे बुड्ढे रुकना बुड्ढे। अरे बुड्ढे किधर भागता है? अबे रो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा बुड्ढे। अबे यार टेल द कॉन्टैक्ट। ओके, मारना नहीं उसको, वो जहाँ पर भी लेके जाएगा घूम फिर कर अपनी बाप के पास ही जाएगा। आंटी आपको क्या हो गया? आंटी पैर मत पड़ो आंटी, ऐसे मत, गलत, हम छोटे हैं आपसे। इसको मारना नहीं है। भाग रहा था कैसे? उसकी चड्डी पकड़, लंगड़ पकड़ के भाग रहा है साला। साले रुक, आरामखोर, भागता किधर है साले? भागता किधर? रुक माँ की रुक जा, भाग। ओ भाई ओके, तो फाइंड एंड इंटरोगेट द ब्लैकस्मिथ। तो इनका जो महल का, इनके जो किले का जो ब्लैकस्मिथ है क्लैन का, उनको हमको ढूंढना है। तो वो हमें ओके समझ गया कहाँ पे वो, इसके अंदर है, ठीक है। शायद से ये झोपड़ी के अंदर होगा, सेंटर वाले। ओके भाई, लेकिन यहाँ पे बहुत तगड़ी फोर्स है यार, बहुत सारे एनिमीज हैं। इनके बीच में से वहाँ पे जाना है, मतलब अब ठीक है, सुमड़ी में जाएंगे हम लोग, इनके बीच में से देखते हैं, ट्राई करते हैं अंदर घुसने के लिए, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत लोग यार, मतलब देखो ना कितने लोग हैं यार, जिधर जाओ उधर लोग ही लोग दिख रहे हैं, इतने एनिमीज।
तो भाई इसको पहले लेते हैं, एक एक करके सबको मारेंगे गाइस चुमड़ी में। चल साले। ओ भाई इधर भी लोग हैं। ओ माँ कसम जाऊँ कैसे मैं? तो गाइस यार मैं जा नहीं सका, मैंने सबको यहाँ पे गाड़ दिया हो, जिंदा सबको मार दिया हो, तो ये पॉसिबल नहीं था अंदर घुसने के लिए सुमड़ी में, तो सबको मार दिया मैंने। अब बात करते हैं इससे। गाली देता साले। गया तू। I'm a friend Doya. तेरे को अच्छे तरीके से लूंगा, गाली नहीं दूंगा। हरामखोर। गाली देगा ना I'm keeping him safe. नाक फोड़ दूंगा। Out of fear he was being followed. जैसे अच्छे से बात किया ना, अच्छे से बात कर साले बुड्ढे। ब्लैक स्मिथ को क्या हुआ? ब्लैक स्मिथ मेरे घर पे। What happened to her? तेरे घर Fell पे। ill a few days back, so I sent her to good sister Friedeswith, healer in town. Sister Frida's with. Got broken bones, a boil on your bum, or too much birth blood? She'll mend you quick. She would need a broad set of tools for such work. She would, and she has it. Comes to me for all her wants, and I craft for her what she needs. Not anymore, you don't. ना बेटा ना, पंगा नहीं लेना बेटा, ब्लैक स्मिथ पंगा नहीं लेना, मार दूंगा मैं सब। भाई मैं फोड़ दूंगा तुझे। भाई ये 2 हाथ का भी नहीं ब्लैक स्मिथ, इसको ऐसे मार दूंगा। रुको आजा। इसको पहला इसका स्टैमिना पहला खत्म कर दो, वीक स्पॉट पे मार के। चला गया गेम खलास, इसका स्टन हो गया। साले लफड़ा नहीं बोला था मैंने, इज्जत में बोला कि इज्जत में पहले बोला था कि मारा मारी नहीं करना है। सिंपल क्या सिंपल काम लेने बोला था, बिना किसी झगड़े से काम लेने बोला था, बट तूने सुना ही नहीं। What see you, old friend? If they see me, this will get messy. तो यार फाइंड एंड असैसिनेट द लीच। एक लीच है तो बहुत ही लीच है, तो उसको मारना है हमको। तो अंदर जाना है यार, यहाँ पे भी बहुत लोग हैं, तो फाइट तो लेनी पड़ेगी। मे भी ऐसे ही काम नहीं होगा। यहाँ पे ऊपर चढ़ सकते क्या? ओ भैया यहाँ से लोग आ गए, भागो भैया भागो, चड्डी धूम पकड़ के भागो 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 भागो, तुम्हारी रात का बैदा मारो, भागो। एंग्लो सैक्सन वुमेन, ओके। ये भैया यहाँ पे अकेले हैं, इनको पहला धरते हैं, इनकी लंगोट पहला खींचते हैं। ओ भाई अंदर भी लोग हैं यार, लोग तो यहाँ पे बहुत है यार। मतलब आंटी आपके पास कोई किल्ली है क्या यहाँ पे अंदर घुसने के लिए? खुफिया किल्ली, खुफिया दरवाज़ा। ओ आंटी इधर देखो। हाँ मैं दिखता हूँ आंटी, मेरे को मैं पहचान में आता हूँ क्या नहीं ना? ओ भाई लोग सब भाग गए देखो कुमड़ी में। अरे भाग सब किधर जाना है भाई? लीच कहाँ पे? लीच को ढूंढो पहला, सबसे पहले तो लीच को मारना है। ये लोग तो आते रहेंगे, इन लोग तो कम नहीं होंगे। लीच कहाँ पे? अबे लीच यहाँ पे ही कहाँ पे तो है। यहाँ पे खाना पकड़ा था, वो खाना तो वैसे ही हमारा फुल है, पोटली हमारा खाने का। भाई यहाँ पे भी 2 लोग हैं अलग अलग, कैसे मारे यार? ये तो देख लेंगे यार। अंदर ही जाना है, अंदर ही वो लीच, जो भी है वो लीच अंदर ही है। लीच आई थिंक एक कैरेक्टर है जो हमको कोडेक्स पेजेस में और एंशियंट वाले लोगों में से काउंट होता है, उनको मारना है हमको। तो वो वैसे भी हमको इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि इसको ख़त्म करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है। इसको मार तो सकता हूँ मैं, लेकिन पूरा हेल्थ नहीं जा रहा है, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। क्या करो, नज़दीक जाके मारो क्या इसको? तो भाई ये देख रहा है इधर, और यहाँ से भी लोग आ गए।
भाई इसका तो हेल्प बहुत ज़्यादा है। एक काम करता हूँ, इसको सबसे पहले मारता हूँ। देखो ये ऐसा, ओ परफेक्ट टाइमिंग। अगर ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं करता मैं तो ये नहीं मरता था, इसका हेल्थ बचता था। ओ भाई क्या मारा, माँ कसम भाई गेम बजा दिया इसको। अबे आ जाओ, अब तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी पहले जाओगे, सब पहले जाओगे। आ जाओ बेटा इधर आ जाओ। ओ भाई फूल है तो भाई ये बंदर है, जम भी मार के मार रहा है। चल अबे बच गया बे। अबे हमको मारना इतना आसान है क्या? हम सीधा ठोक देते हैं। ओ भाई क्या मारा, सीधा कोयता मारा मेरे मुंह पे, मेरा निशान उमटा है मेरे मुंह पे। साले तेरा वीक पॉइंट इधर है। ओ भाई भागो भाई, ये पागल हो गया। अरे बेटा इतना पागल मत होना बेटा, रुक पहले इसको मारता हूँ। अरे साले तेरे विंग्स उड़ा देते, तेरे बरगड़े तोड़ता पीछे से। रुक तो भी आ जा साले, तेरा वीक स्पॉट दिखा बुड्ढे। अबे वीक स्पॉट पे लग रहा है नहीं इसके। ओहो लग गया, अब आ जा साले। ओ माँ कसम भाई टकला बैंड डायरेक्ट सीधा नारळ फोड़ा इसने, पूरा नारळ फोड़ दे इसने पूरा का पूरा। आजा अबे लीच साली, लीच आजा बे। लीच का तो गेम बच गया बे। देखो अबे तुम लोग चिरी मिरी लोग बाजू तो ना, एक बुक के भी नहीं है। मर साले, लीच को खत्म करते हैं, कंफर्म किल करते हैं। लीच मैडम, हाँ आतड़ी फूट गया, पूरा आतड़ी फट गया। One more, that's all. I'm nearly finished. That is enough. Oh, it's you. For all the dead we collect, dear sister, you and I are equals. Quite a charnel house. I'd lost count of how many. I suppose I've been greedy in my research, but not for lack of care. The ancient ones, the arbiters, they built us out of simple pieces. So easy to break, so difficult to mend. There must be an improvement. We should be stronger, faster, smarter. I could have fixed us. I could have made us better. We are blood and bone and spirit, Friedeswith. Perfect as we are. You've such beautiful eyes. Finish it. Would you? तो गाइस लीच को हमने मार दिया है, एक किल कंफर्म हो गया है। अबे तुम साले 3 इडियट्स ऊपर बैठ के तमाशा देख रहे थे क्या? तुम्हारे किंग को हमने मार दिया है, क्वीन नहीं जो भी थी पता नहीं। तो यार रिपोर्ट टू एरके को रिपोर्ट करना। तो एरके कहाँ पर है? एरके बेटा हम यहाँ पे एरके आओ। अबे तू मेरे के नहीं सालों साले, तू तो साले हराम खोर। ये रिक्रूटमेंट का जो वाइकिंग है साले, हट तेरे को नहीं रिक्रूट करना है मेरे को। आई डोंट नीड एनी रिक्रूटमेंट गाइस। एरके यहाँ पर है। ओहो एरके क्या नज़ारा देख रहा है भाई, लंदन सिटी का। लंदन में एरके नज़ारा देख रहा है, सिक्योरिटी शेकते हुए यहाँ पे। The leech is flat out. And did you catch a name? A nun, name of Friedeswith. What? The good sister? That can't be right. She was a saint. A healer and a... Gods! That brick fits this week's wall of shit. You knew her? She saved me. Mended the broken leg. Thought I'd lose it. But not with Friedeswith. You wouldn't know it was ever broken.
The sands will run backwards now. Without her, we'll return to balancing humors. All of that for this. Secrets of the human form. How she saved lives. And how she ended them. It might be the ravings of a madwoman. Not every problem has a clean solution. True. Very true. I've built my name selling the heart fix. I'll live with it. This was her fix. All her ideas and discoveries written here. Ill-gotten gains. I have a mind to burn that bloody tome. Is that the right call? It has cures for everything, from boils to broken bones. It is worth keeping. We fight wars to save those we love, and pay in blood for what we win. This book, this is your good sister's battlefield. Her kingdom. You may be right. We can't return the dead to life. But their sacrifice can mean something. If you need me, I'll be at St. Paul's searching for something on the compass. Thanks for all this, Broca. अब भाई ब्लीडिंग द लीच खून निकाल दिया है ब्लीड नहीं ब्लीड पूरा करवा दिया है लीच का पूरा खून निकाल दिया उसका आतड़ी फोड़ दिया मैंने फाड़ दिया चक्कू घुसा के तो अभी वापस नया मिशन इसी लंदन सिटी का क्योंकि अब तक तो हमने अलायंस बनाया नहीं है लंदन में तो अलायंस हमारा अब शायद से बन सकता है मीट स्टोव इन द वेस्ट मार्केट तो वेस्ट मार्केट में हम लोग अभी आ चुके हैं यही वेस्ट मार्केट है स्टोव को हमको ढूंढना है स्टोव गैस किधर है ओके स्टोव मिल गया यहाँ पे Welcome to the West Market. A lawman like you could set folks on edge in a square like this. Why not wear a cloak? Hide my face? Not a chance. It does the people good to see a lawman on the hunt. You and Erke found the identity of the leech. Some holy healer. She was called Frida Swith. Had an appetite for eyes. If this order can corrupt Lunden's favored saint, what hope do we have? Any noise yet about the arrow and recruits? I've heard whispers. Somewhere here, a man gives you a coin, and this coin grants you entry to a contest run by the Arrow's men. Which man? I see too many here. He's good at blending in. I haven't spotted him yet today. I will sniff around. You stay back. Eivor, what was your impression of Erke? Erke was torn up by the good sister's dark dealings. I do not know him well, but a guilty man does not have a clean conscience like his. Forgive me. My latest thoughts have been restless. I've been a reeve for so long. Fighting for God's justice. I shed my earthly attachments for his great plans. But you could not shed Erke and his friendship. No. No, I'm not sure I could. It is not good to attach yourself to any one person. Be your own man. Forge your own path. I should. I know. I should find one of these coins soon. Will you be around? I'll return to St. Paul's just down the road. Godspeed, Eivor. Is a verb, and French is the maître, is nol silt sinne. So lucet is with. तो गाइस एक्चुअली अभी हमको एक कॉइन चाहिए यहाँ पे किसी भी एक आर्मी वाला कोई मतलब जो होगा उससे लेना है क्योंकि अगर उसके पास वो कॉइन है तो वो कॉइन लेके हम लोग एम बाजी में निशानेबाजी में मतलब तीरबाजी में क्या बोलते हैं उसको तीरंदाजी कुछ तो बोलते हैं यार पता नहीं मेरे को भी एग्जैक्टली तो उसमें हम लोग हिस्सा ले सकते हैं तो अगर उसमें हिस्सा लेंगे तो हमको चांस मिलेगा और एक मर्डर करने का अबे ये साला इधर आ गया अबे साले आ जा तेरे से वैसे चाहिए This coin is engraved with an image of the London Colosseum.
यार आप देख रहे हो कितने अच्छे ग्राफिक्स है यार लंदन सिटी के। लंदन में बहुत ही अच्छी अच्छी इमारतें हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई है। कहाँ पे बिल्डिंग्स धसी हुई भी है, गिरी हुई भी है, लेकिन उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमको यहाँ पे अलायंस बनानी है। वो हमारा इम्पोर्टेंट जॉब रहेगा सबसे पहला, वो सबसे पहला काम है। तो अभी तो जाके हमको एमबाजी में हिस्सा लेना है, तो जिससे हम लोग को वो आगे मौका देंगे बढ़ने का। तो कॉइन भी हमारे पास है। तो कंप्लीट द एरोस चैलेंज, तो बहुत ही आसान काम है यार हमारे लिए एरोस का चैलेंज करना। मतलब मैडम जी हमारे पास कॉइन है, आप हमको लीजिए। मैडम आ जाओ, बात करते थोड़ा। You are looking for skilled archers, and now you have found one. This contest is private. Invitation only. Your men are handing out these coins like they were on fire. Is this enough? It's enough to keep us talking. But I'll want to see how well you handle that bow before you go any further. Want a trial round to test your... I've had enough practice. Let us begin. A real fanatic you are. Get ready. It's a simple contest here. Hit all targets true before the sand runs down. Here's the new competitor, a Norse from the northern wilds of Mercia. And our current reigning champion, Sayed. All right, take your mark. Hook set, arrows not, fire! A perfect strike. Eivor leads to victory. मैडम हम बहुत ही फास्ट हैं मैडम, देखा कितना फास्ट हमने मार दिया। डेडली है हमारा, ठीक है। You have earned your place at the Arrow's side today. He'll be eager to meet you. Pull yourself to the Imperial Arch and speak with our man Hussa. Recite the phrase. May the Father of Understanding guide us, and he'll know it's you. Are you Husa? Yeah, and who's asking? May the Father of Understanding guide us. And may the Mother of Wisdom give us strength. You're to stand just there. Look your best when the अबे arrow साला ये comes तो मेरे को forth ये and लग keep रहा है still. डैन बिल्जेरन लग रहा है सच में, वैसे दिख रहा था। डैन बिल्जेरन, माय गॉड, खतरनाक। और यहाँ पे शोर मचता हुआ, हाकार मचता हुआ बहुत सारा लोग यहाँ पे धरने पे आ चुके हैं, स्ट्राइक पे। ये टकला अवगोस है इसका नाम, अवगोस बेटा, तुमको तो हम छोड़ेगा नहीं। अभी देखो तुम्हारा भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत पब्लिक को छोड़ा है तुम लोगों ने, तो पब्लिक को छोड़ने के लिए अभी हम आपको सबसे पहला काम करते हैं। इसको ही पहला लेते हैं घपचिप, इसको नहीं, अवगोस को लेते हैं। यहाँ पे 3 लोग, यहाँ पे 3 लोग हैं। इन लोग चिरी में इन लोग क्या कर पाएंगे यार मेरा। But our governor knew. He confided in me his real plans. कर दूँ? बोल बेटा, कर दूँ? कर दूँ बेटा? देखो, ओह माय गॉड, परफेक्ट टाइमिंग। ओ भाई, मार कसम, रीड क्या भाई, इसने सिर की हड्डी में से पूरा हड्डी भी दिखा है टूटते हुए। Arrows knocked. It's a hard thing to raise the rats of a city into warriors. Hook set. You raised no one. You only trapped them in their cowering fear. Draw strings. First wave fire. No, I gave these men order. I gave them purpose. I showed them their common enemy. Anchor strings! Second wave fire!
I was arrow for their rage. Without a foe to consume, we devour ourselves. He speaks true. A man without an enemy defeats himself. Justify all you want. You're just a king killer and a coward. Mighty High Horse, you'd do the same if you were me. Aim and fire! Ram in! Leave no room! Throw the door dry! Don't fall for any traps. You will pay! Try to trap any blow. तो यार इन चिरीमिरी को हमने काम 25 कर दिया है। अब सीधा बढ़ते हैं हम लोग आगे। हमें अभी मिलना है रिटर्न टू स्टोव, तो स्टोव के पास जाना है। तो सीधा भागते हैं स्टोव के पास। और ये क्या है यहाँ पे, थोड़ा बहुत गोल्ड है, थोड़ा बहुत खरीदी मतलब लूटते हैं चेस्ट। स्टोव बेटा, स्टोव और गैस, ये दो लंदन के दो चहेते। तो स्टोव यहाँ पर है। You're unharmed. Praise be to God. It will take more than a few lads with newly polished bows to fell me. The arrow was a boy. A man with a boy's brain called Avgus. Avgus? That can't be right. I could return with his head on a spear if you would like to see. No. You've no reason to lie. Yet Avgos, my old friend, had no cause to murder. He saw Lunden as a kiln of rage, to harden the softness of its younger men. Perhaps I ignored in him what I hoped not to see. Ambition, greed, anger. From one man, such hatred is easy to spot, but from many, it is a fog that fills the room. Power. Men will claw for it and cling to it at the cost of everything. Very true. And it is cold comfort, when glory has the taste of your family's blood. 2 targets down. Only the compass remains. If it were my men killed, I would be on my way to London now. The compass will come, and we must be ready, expecting the worst. I do not want anyone catching me off guard. Could we take the fight to him? There may be a way. Let's regroup in the church when you've had time to rest, Broga. Itaque multorumque Christi The good fidelium sister was explenti. murdered! And where were your guards? You hear me, okay? Her blood's on you! It's the ruse, I tell you! It's them that killed Prigil and shifted the blame! तो यार मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया मिशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। और अभी हम लोग आ चुके हैं स्टोव और एयर के, ये दोनों को हमको मिलना है। तो मे भी ये फाइनल हो सकता है अलायंसेस का, क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट जो भी मिशन है, जो भी हम लोग प्लेस करते किसी भी कंट्री को, या फिर कंट्री को नहीं, एरिया को या फिर स्टेट को, तो उतना ही रहेगा। तो पॉसिबली अब ये दोनों क्या है भैया, क्या कर रहे थे भैया आप दोनों? पप्पी ले रहे थे, गलत बात है पप्पी लेना यहाँ पे।
इट्स अ क्राइम गाइस, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। चर्च में आप और पप्पी ले रहे हो, Be बहुत ही बुरा cautious with दिखता है। that. Anyone could have walked in. They might have, and I'll serve penance before God, but I will not feel shame. Not ever. Times being what they are, Elskan. I'd rather not join Tricker among the Headless. You make a well-timed point. Have you stepped out today? There's a strange feeling brewing in the streets. I've heard the shouts. The deaths of Avgos and Frieswith have angered many. Let us hope the compass numbers among the offended. I don't doubt it. But are we ready for him? It is time we focused on the compass, gather all we know, and lay it out, plain as day. Aye. We let fly the feathered dart, cut raven ink from a cowering quill. Now we wait, wolf-tensed, for the master of the river rep to return and revenge his shaken warriors. Well, well. This one's got the gift of Odin's meat. What is on your minds, though? We know the compass is a sailor, a captain from Francia. And he won't like hearing he's got a leak in his hull, so to speak. With the death of the leech and the arrow, you want to hit back. But we can't know how or when. Apart from this, the man's invisible. Coward, if you ask me. Burn in your hell, you bloody reeves! We're pinned in! Is there another way out? Tower! There's an open window they can't have reached! I'll go up! You find a way out! Evil! Make for the steeple! Then you're still spun for us, my stone. We've managed. Show me. माई गॉड माई गॉड माई गॉड माई गॉड, हम लोग अंडर अटैक हो चुके हैं गाइस। और अभी हमको ये रास्ता ढूंढना है, क्योंकि वो दोनों तो चढ़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे बंदर तो सिर्फ हम ही है, हम बंदर है। ओके, रास्ता मिल गया हमको बाहर जाने का। ओ भाई, भाई क्या एनिमेशन दिखा है, क्या 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 मोड दिखा है, स्टोरी मोड यार, क्या सिनेमैटिक मोड ये दिखा है, सही दिखा है। देख रहे हो सब जलकर राख हो रहा है। लंदन सिटी में आग लगी, लंदन इज फॉलिंग डाउन गाइस। तो इसी के साथ हम लोग बचने आने वाले हैं। द कंपास वाइसलिन। ओके, नया कॉन्ट्रैक्टर मिला जिसको हम लोग को मारना था, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखो यहाँ पे तो इन्होंने लाइन लगाई है, ठीक है। पहले इसको लेते हैं टाइमिंग पे। ओ भाई खतरनाक। ओके, और समथिंग इज ब्लॉकिंग द डोर्स, इसलिए डोर नहीं खुल रहे थे बाहर से। उन्होंने बक्से लगाए साले लोगों ने। अबे सालो झपड़ पंजो, हाँ झोपड़ी वालों, आओ झोपड़ी वालों जरा सालो। हाँ सोपड़ी के, तेरी तेरी तो तेरी साले बुझकर पढ़ तो घपचिक चीर फाड़ कर दिया। हाथ दिखा, अरे हाथ दिखा बाबूजी हाथ दिखा। कंगना चूड़ियाँ मत पहनो बाबूजी। ओ बेटा बेटा बहुत हरामी हो तुम, बहुत ही हरामी निकले बेटा। बड़ा आप भी आ जाओ बेटा रुको बेटा, हम अपने दोस्त को बुलाते बाहर। बेटा आग जल गई बेटा, जलकर राख हो जाए बेटा। लंबा रहना, आ जाओ। सेंट पॉल कैथेड्रल। चलो अब इनको बाहर निकालना है। अबे सालो बाहर आओ ना, आराम करो, कब से मैं ही मेहनत करूँ। Fresh air! That's the lot of them! Let's get clear of this inferno! I had a view of the city from the roof. There's a new flotilla in the harbor. The compass. Bastard. If
If we commandeered the springles at Avgosport, we could rain a cloud of arrows on the invaders. I'd sooner take the flank and go around this army to the boats. If we cut the head off this beast, the Order's men will be easy to rout. Let us focus on the compass. Kill him and the battle's won. I can lead you straight to him, through the reeds, like Stowe's Moses. Whatever happens, this ends tonight. May God guide our swords and cover our backs. Don't be reckless, little voice. I'll see you when it's done, Erke. Count on it. Follow me. I know the path straight to the docks. We'll be able to flank them. Let's go. तो गाइस यार हमने एरके को सिलेक्ट किया है क्योंकि एरके बहुत इम्पोर्टेंट लगा मुझे। उसके बाद जो फाइट मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छा है, और इसके बाद रोड भी है, इसको पता भी है कहाँ पे जाना है हमको। ओके साला, मतलब ये अभी यहाँ तक ही आएगा इसको। ओके यहाँ पे ऐसा है ना, तो इसको पार कर आता नहीं है, तो अभी हमें ही जाना पड़ेगा वहाँ पे। और जो वाइसलाइन जो भी था वो एनिमी हेड, वो यहाँ पर ही है भाई। इन लोग बांध मरे भाई। रुको, मुझे पहुँचने दो, मुझे बोर्ड के ऊपर पहुँचने दो, फिर मैं तुमको देखता हूँ, ठीक है? फिर सामने सामने बात करेंगे। रुको, आ गया मैं। मुझको पहचान लो, मैं हूँ एवोर। अबे बुड्ढे साले नल्ले, हाँ झोपड़ी वाले। अबे हम चक्कर आ जा साले। चिवड्यात लाडू गेला तू। चिवड्यात लाडू तेल काढू। किधर गया बे साले? वाइसलाइन कहाँ पे है इनका? हेड कहाँ पे है? ये क्या करता है भाई? ये कुछ काम का नहीं है। ओके भैया, तुम वहाँ पर हो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई 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 भाई, बहुत ही खतरनाक एरोस फेंके हैं इन्होंने मेरे पे। आया मैं वाइसलाइन तेरे यहाँ पे आया। रुक बेटा, दोनों सामने सामने फाइट करेंगे, ठीक है? छुप के बाहर नहीं करेंगे। आजा आजा साले आजा। अबे साले बुड्ढे। अबे जल रहे, तू जल कर साले मर जाएगा साले। तेरा भुजिंग बन जाएगा हरामखोर। ओहो, तेरा स्टैमिना कैसा लगा बेटा? बेटा ओ बेटा भैया, इसका विंग्स फाड़ दिया बेटा। ओ भाई, इसको तो फेंक दिया बाहर में, तो पानी के अंदर मार दिया उसको भाई। भाई ये तो भाई ये ऊपर ही नहीं आ रहा है भाई, मर गया। कसम, खतरनाक। इसको ऐसे ही मारना पड़ेगा अभी भाई साहब। ये एपिक था, ये हार्ड बनता भाई। भाई उड़ गया। हम तो उड़ गए, तुम तो उड़ गए आसमान में। वलहल्ला में गए तुम, वलहल्ला। दारू, बहुत दारू पिया। मुनकी, तुम्हारी मुनकी हमारे सामने है, ठीक है बेटा? पैर नीचे रखो बेटा। बेटा ऐसा शानगिरी नहीं करते बेटा। आप तो अब मर चुके, आपको अब चटका भी लगेगा। आप तो अभी आत्मा बन चुके हो, ठीक है? You do have power here. Power you have earned. I have finished my work in London. That is enough. London is only a beginning. My order reaches further than your tiny boats can take you. Never forget, Trigger, my old friend. Man at sea may have gold and glory, but he is always a slave to the churning tides. We are that tide.
तो गाइस यार आई थिंक अभी यहाँ पे ये जो लंदन को प्लेजिंग था वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो मेन बॉस था, मतलब जो दिक्कत ला रहा था लंदन सिटी से अलायंस बनाने के लिए, उसको हमने ख़त्म कर दिया है। और ये जो दो बंदे हैं, दो भाई लोग हैं ऑलमोस्ट, जैसे हम और सीगढ़ है, और ईवार और वो है, क्या नाम उसका, बुप्पा, बम बुप्पा, उब्बा। How do I look? Half drowned and half burnt. Not half तो of either. अब लंदन हमारा अलायंस बन जाएगा मे बी, The compass is dead. और London ये is लंदन yours सिटी to wreck or हमारे साथ मिलजुल कर काम करेगी। तो कभी भी हमको अगर ज़रूरत पड़ी वॉर में, तो हम अपने अलायंसेस को बुला सकते हैं। तो यार वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। और अगर आपको भी चाहिए ऐसे आर्मर्स अलग अलग अच्छे, तो टिप्स है मेरे पास, तो बिना से कमेंट में रिप्लाई भी दे देना। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर। और इसके बाद में हम लोग जो अपनी सीगढ़ की वाइफ है रणवी, उसको भी रिपोर्ट देंगे, क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट होता है ना, क्योंकि अगर हमने अलायंस बना लिया तो बोलना चाहिए ना कि यार लंदन में अपने अलायंसेस है। तो अभी वी हैव डन अ प्लेजिंग टू लंदन। तो लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय, और खुश रहना, खुश। और सब्सक्राइब का बटन दबाना गाइस प्लीज़, और लाइक भी करना और शेयर भी करना, ठीक है। It seems the wind calls me back to Randvi. Let's tell her the good news. I should speak with Hytham. And what can I do for you on this fine day? Greetings. Lunden is with us, and cleansed of the Order. Good. Hytham will be pleased. I should speak with Hytham. Next time, get a bit of practice in. Absolutely not. Understood.